In this video, we'll see creating another function that is product. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ए और बी निकालेंगे. सो इट्स वेरी इजी. ओके, एक मेन फंक्शन है इंट ए इक्वल्स टू वाई इंट बी इक्वल्स टू 2. ठीक है, तो हमने एक मल्टीप्लाई फंक्शन बनाया है यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक इंट मल्टीप्लाई इंट ए इंट बी, और इसके अंदर हमारा लॉजिक. ठीक है, तो क्या है ये पब्लिक स्टैटिक एक्सेस मॉडिफायर. उसके बाद कैसे क्रिएट करते हैं, रिटर्न टाइप लिखना पड़ता है, क्योंकि हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट हमें रिटर्न करना है. तो प्रोडक्ट इज एन इंटीजर नंबर, सो हमने यहाँ पे इंट लिया है. ओके, सो पब्लिक स्टैटिक इंट, द फंक्शन नेम मल्टीप्लाई एंड द पैरामीटर्स. ठीक है, दिस आर द फॉर्मल पैरामीटर्स, int a comma int b, and here we are doing the product, that is int product will be equals to a multiplied by b and will return this product value. Okay, so in the main function what we'll write, we will receive one integer value of product. ठीक है, तो उसको हमने प्रिंट करना है. तो प्रिंट कैसे करेंगे, ये मल्टीप्लाई ए कॉमा बी जो है, ठीक है, ये फंक्शन का हमें एक आउटपुट मिलेगा जो कि एक इंटीजर होगा. तो उसे हम एक इंटीजर वेरिएबल में स्टोर करते हैं. ठीक है, तो ऐसे स्टोर कर सकते हैं, लाइक इंट आंसर इक्वल्स टू मल्टीप्लाई ए कॉमा बी. यहाँ पे एक मल्टीप्लाई ए कॉमा बी कॉल किया हमने इस फंक्शन को, और इसका जो आउटपुट है उसे हमने आंसर में स्टोर किया. एंड फाइनली वी कैन प्रिंट दिस एस आउट, ए मल्टीप्लाइड बाय बी इक्वल्स टू आंसर. विल सी द कोड डायरेक्टली. तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं विच विल बी public static int multiply int a comma int b. These are the parameters what we are using in this. Okay, what will this int product will be equals to a multiplied by b and will return this product. ठीक है, इज वेरी इजी. तो अभी क्या करेंगे, दो मेथड है हमारे पास. एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि लाइक इंट आंसर इक्वल्स टू and this multiply a comma b. Okay, this is the one thing, and finally we can print this value like a multiplied by b का जो आंसर है वो हमारा आंसर है. दिस कैन बी वन मेथड. ठीक है, this so a multiplied by b will be 8 because 4 into 2, but we can skip this thing and we can directly write. I'll comment this. We can directly write as out print multiply call a comma b, okay, which will give me the same answer. Okay, this is 8. So this was the product function. Thank you.